Act 1, Scene 2 begins with Prospero and Miranda. Miranda is requesting her father that, Father, if by your art, my dearest father, if you have put the wild waters in the roar, allay them. So the daughter is saying to her father कि पापा अगर आपने अपने मैजिक से ये वाइल्ड वाटर मैंने ओशन के वेव्स को आपने रेज किया है तो प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए. Then she says the sky it seems would pour down pinching pitch. So she is saying कि ऐसा लग रहा है आसमान ऊपर से पिच गिरा रहा है. तो मिरांडा इज सेइंग टू हर फादर कि स्टॉर्म इतना भयानक रेज हुआ था कि ऐसा लग रहा है कि आसमान से पिच गिर रहा है. But the sea mounting to Wilkins Chick, and the sea has been so strong, so powerful that the sea seems to touch the sky. So Miranda is saying to her father कि पापा अगर आपने अपने मैजिक से स्टॉर्म को रेज किया है तो प्लीज पापा आप इस स्टॉर्म को रोक दीजिए. फिर देन मिरांडा सिंह के पापा ऐसा लग रहा है आसमान से काले काले बादल के पिच जैसा कुछ गिर रहा था. फिर शी सेइंग के द ओशन द वेव्स was so strong that it was touching the sky and dashes all to fire. मतलब ऐसा लग रहा था कि तूफान में टेम्पेस्ट में कि ओशन में और स्काई में थंडर लाइटनिंग होने की वजह से चारों तरफ आग निकल रहा था. So if they ask you in the short question or even in 5 marks question to describe the storm and the tempest, then you have to write this, that the wild waters were very powerful. The sky was, it seems, was dropping pitch, and there it seems that the waves were touching the sky and there was fire all around. It was all done by Ariel. Okay. So then Miranda is saying, oh Papa, I have suffered with those that I saw suffering. So Miranda बोल रही है कि पापा मैंने जब लोगों को सफर करते देखा है so ऐसा लग रहा था कि मैं खुद सफर कर रही हूँ. So Miranda could relate to the suffering of the people in the ship. Though she was on the island, but she has seen in the storm that some people were suffering. So she is saying, Father, I could feel their suffering. So she has a very powerful empathy in her. She could relate to the suffering of other people. So Miranda बोल रही है, oh, I have suffered. मतलब मिरांडा भी सफर की है, of course not in reality, psychologically, with those that I saw suffering. मतलब जिन लोगों को उसने शिप में सफर करते देखा है वो भी उन लोगों को जैसा सफर किए. With those that I saw suffer, a brave vessel, my ship, it's a very strong vessel, who had no doubt some noble creature in them, all dashes to pieces. So Miranda is saying कि मैंने देखा शिप जो इतना बड़ा था, इतना strong था, ये थी. Ship is a feminine gender. So ship which was so strong and powerful and had lots of good people in it, it all dashed into pieces. सब टूट के बिखर गया. Oh, the very crying did knock my heart. And I saying कि उनके रोने से, उनके दर्द भरे चीखों से मेरे दिल पे बहुत दुख गुजरा है. So she could feel the sorrow of the people crying, and the crying has touched her heart. It against my heart means the crying touched her heart. Poor soul, they all perished. Miranda saying उतने सारे लोग थे और सबके सब मर गए. So यहाँ पता चल रहा है Miranda is very caring, very loving. Had I been the god of power, I would have sunk the sea within the earth before the ship would have swallowed. So Miranda is saying कि अगर मैं भगवान होती, नेचर होती, क्रिएटर गॉड होती, तो हम क्या करते? I would have made a hole in the earth and all the ocean water would have gone into the earth and the ocean would have become dry and thereby the ship would be saved. Of course, it's an imagination of an innocent girl. You can't dry the ocean. You can't make all the water go into the whole of the earth. But she's saying that if I had been the god of power, अगर मेरे पास कोई भगवान वाला power होता, तो हम क्या करते? I would have sunk the sea. Normally people get sunk in the sea, but she would sunk the sea itself. कहाँ? In the earth. उन्हें पूरा समुंदर ही अर्थ में चला जाता. And the good ship would not be swallowed by the storm. फिर वो समुंदर, इससे पहले कि समुंदर शिप को निगल लेता, पूरा समुंदर का पानी अर्थ में चला जाता, and the good she would not be swallowed.
And the frouting soul, मतलब crying soul, disturbing soul, रोने वाले लोग जो उसमें थे, they would all have been saved. So here यहाँ एक word important है, here मैंने before, इससे पहले कि समुंदर शिप को सोलो करता, इससे पहले the frouting soul would be destroyed by the ocean. Sea would have sunk the sea. So वो समुंदर को ही सुखा देती अर्थ में. इससे पहले के कोई शिप ओशन में बर्बाद होता, इससे पहले कि कोई लोग मरते, मिरांडा सब लोगों को बचा लेती. So here again we can comment on the character of Miranda, that she is so willing to save people's lives, that she is willing to become God, and she is willing to sunk the ocean itself in the earth before the ship can be destroyed by the storm, before anybody is dead. So Prospero is saying, be collected. Prospero is saying to her daughter कि बेटी relax, calm, कुछ नहीं हुआ, don't worry, nobody has died. So Prospero is saying, be collected, no more amazement. Prospero is saying, घबराओ मत, don't be surprised, tell your piteous heart. So Papa is saying to her daughter कि बेटी घबराओ मत, relax, calm down. Tell your kind heart, piteous means pity वाला heart, दयालु heart को बोलो, there is no harm done. So the father is saying to the daughter कि बेटी घबराओ मत बेटा, अपने दिल को बोलो कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, there is no harm done. And so, oh, the day, कितना दुख का दिन है. Prospero is saying, no harm, I have done nothing but in care of you. It's a very significant line. Prospero is saying to his daughter कि बेटी मैंने ये storm raise किया तुम्हारे लिए. Of thee, my dear one, my dear daughter, you are ignorant of what you are, not knowing. So father is saying to the daughter, बेटी तुमको कुछ नहीं पता है. You are ignorant, you are not aware of what I am, who I am, whence I came. माने हम कहाँ कौन है, मतलब तुम्हारे पापा का बैकग्राउंड कि वो कहाँ से आए, कब आए. You just know that I am no better than Prospero. So Prospero is saying to his daughter कि बेटी I have done nothing but in care of you. मैंने जो कुछ भी किया है मैंने तुम्हारे लिए किया है. मैंने ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने किया है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है. ये स्टॉर्म मैंने तुम्हारे लिए रेस किया है. My daughter, you are ignorant of what you are. Art mane are, do mane you. So Prospero is saying, beta, you are ignorant of what you are, not knowing whence I came, not that I am better than Prospero. So she is saying to her father कि पापा हमको बहुत दुख हो रहा है. So पापा is saying, घबरा मत बेटा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए रेस किया है. तुमको कुछ नहीं पता, यू आर इग्नोरेंट ऑफ व्हाट यू आर. तुमको पता ही नहीं है कि तुम कौन हो, हम कहाँ से आए हैं. बस तुमको ये पता है कि आई एम जस्ट मैन प्रॉस्पेरो एंड आई एम अ मास्टर ऑफ अ स्मॉल सेल. मैंने एक छोटा सा केव है, हम उसके मालिक हैं. तुमको बस इतना ही पता है, तुमको कुछ नहीं पता है. And no greater than your father, you just know that I'm your father, not something great, not something larger than life. So Prospero is saying to her daughter that, daughter, you do not know who I am, you do not know my background, you just know that I am an owner of a small cell, no greater than your father, means you know that I'm just your father. Miranda is saying to daughter, Papa, more to know did never meddle with my thoughts. So बेटी saying पापा इससे ज्यादा इंटरफेरेंस मेरे थॉट्स में आया नहीं कि आप कौन है, कहाँ से आए, हम यहाँ क्यों आए, कैसे आए. मतलब I did not interfere into the thoughts to know more about you. It is time that you should know. The father is saying, बेटी वो time आ गया है that you should know your father. Lend me thy hand and pluck this magic garment of me. So till now Prospero was wearing his magical garment. So Prospero is saying कि बेटा ये magic वाला जो Harry Potter type dress है इसको उतारो. So Miranda helps the father, the daughter helps the father to open the dress. Thereby symbolic representation is that Miranda and Prospero are now not a magician or a person who sees magic, but it's a conversation that is going to happen between a father and a daughter. This opening of the magical garment is a symbolic representation of the opening of the professional job and thereby shifting into a father and a daughter role.
So Prospero is saying, lend me thy hand, मतलब give me your hand and pluck my magic garment from me. मतलब ये magical dress यहाँ ऊपर में जो चोला जैसा है उसको उतारो. So he putting aside his cloak, तो अपना वो magical garment उतार दिया. And then he's saying to his magical dress and went, lie there my art. He's saying to his magical dress, यहाँ मेरा dress तुम यहीं रहो. And then the father sees the daughter is crying, so he's saying to Miranda, Miranda, wipe your eyes, wipe your eyes, have comfort, मतलब relax करो. The direful spectacle, मतलब the horrible sight of the wreck, मतलब shipwreck, destruction. So the father is saying to the daughter कि बेटी जो तुमने भयानक sight देखा है shipwreck का, which has touched the very virtue of compassion in you. So father is saying कि ये जो horrible sight तुमने देखा है, it has touched the very goodness, love, kindness in you. I have such provision in my art. So Prospero is saying कि मेरे magic में इतना power है, इतना effect है, so safely ordered there is no soul, not even a perdition to the hair. So Prospero is saying that my magic is so powerful that I have raised the storm. I have done all this thunder and lightning. I have raised those pinching tar that looked like falling from the sky. I've raised the wild water. All I have done it, but I have done it safely. And there is not one person जिसको कोई भी चोट पहुंचा है. Not even prediction मैंने harm to a hair. Prospero is saying कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका एक बाल भी बाका हुआ, एक कोई harm hair को भी हुआ. Be tied to any creature in the vessel. Be tied means related to. Means there is nobody related to the ship or in the ship whose even a small hair has been harmed in the ship, which the this cry would sink the sea. So Prospero is saying that you saw them crying, you saw the ship sinking, but there is no betide when related to any person in the ship जिसको कोई नुकसान पहुंचा है. So Prospero is saying कि बेटा बेटी मैंने ही ये storm raise किया है, and I have done it very orderly, and I have done it very well, and there is nobody, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई harm हुआ. Okay. और ऐसा जो तुमने देखा है कि लोग मर रहे थे, शिप डूब रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है. सिट डाउन, सिट डाउन. सो द फादर इज सेइंग टू द डॉटर, बेटा बैठो, और दो मस्ट नो योर फादर टुडे. सो द फादर इज सेइंग टू द डॉटर कि बेटी आज तुमको ये सब जानना पड़ेगा कि तुम्हारे पापा कौन है, कहाँ से आए, बैकग्राउंड क्या है. सो प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा सिट डाउन on the stage, means on the island in the visuals. Miranda, you have often begun to tell me what I am, but you have stopped. So the daughter is saying कि पापा आपने बहुत बार बताने की कोशिश की थी कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, हम लोग कहाँ से हैं, but you have stopped in the middle and you have left me to a bootless inquisition. मतलब एक meaningless question पूछ, मतलब meaningless position में ले आके आप छोड़ देते थे. मतलब my questions you used to become meaningless. उसके आगे आप कुछ बताते ही नहीं थे. Concluding, मतलब हर बार जब मैं पूछती थी तो आप बोलते थे stay, not now, not yet. So Prospero, when he used to narrate his story to his daughter, तो बेटी पूछती थी पापा इसके बाद और क्या, तो पापा बोलते थे नहीं बेटा अभी नहीं. Prospero, the hour has come. Prospero is saying कि आज तुमको पूरा कहानी बताने का वक्त आ गया. So the father is saying to the daughter that the time has come that I should tell you the whole story. The very minute bids thy open ear. So Prospero is saying to his daughter, कि I order you right now to open your ear. Open ear, nobody can open the ear. It's not a cup. So he means to say कि आज अपने कान को एकदम खोल के तैयार रखो, अब हम पूरा कहानी सुनाएंगे. Obey and be attentive. So Prospero is saying आज कान को खोल के तैयार रखो और सुनो. फिर Prospero is saying, can you remember? Prospero is saying कि तुमको क्या याद है? Can you remember a time before we came onto this cell? So Prospero is saying to his daughter कि तुमको कुछ याद है कि हम लोग जब यहाँ इस आइलैंड में आए थे, कुछ भी याद है तुमको? I do not think you can because you were then just 3 years old. So Prospero first is asking कि बेटी तुमको कुछ याद है कि हम लोग यहाँ जब आए थे तो कैसे, कब आए थे? How did we come here? Who brought us here? Who we were? Where we were? So the father is asking the daughter, do you remember? But then the father himself says, you can't remember much because you were just 3 years old.
Miranda saying, certainly sir, I remember. बेटी बोलती हाँ पापा हमको याद है I can. So Prospero is saying, what? By any person or house, उनको कोई लोग, कोई इंसान, कोई घर or anything the image tells you, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में कोई image है कि कौन से इंसान थे, कौन थे, that has kept in your remembrance, मैंने तुम्हारे दिमाग के मेमोरी में कुछ भी याद है. Miranda is saying it is very far off, like a dream. Miranda is saying जो हमको याद है ना पापा, वो सपनों के तरह. तो उसमें कुछ भी कंफर्मेशन ये सब धुंधला जैसा, रात को सपना देखते सुबह में भूल जाते. सो मिरांडा इज सेइंग कि पापा जो भी हमको याद है इट्स लाइक ए ड्रीम रादर देन एन एस्योरेंस. मैंने कुछ भी क्लियर गारंटीड विविड नहीं है, जो भी याद है सपने जैसा धुंधला है. देन माय रिमेम्बरेंस कैन गारंटी, मतलब जो भी हमको याद है उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई विविडनेस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है, जो भी याद है वो धुंधला है. Had I 4 or 5 women once that tempted me? मिरांडा सिंह कि पापा क्या जब मैं छोटी थी तो 4-5 वुमेन लोग हमको देखभाल करती थी. प्रॉस्पेरो सिंह यस यू हैड मोर वुमेन, नॉट 5-4, उससे भी ज्यादा लेडीज लोग, केयर टेकर्स लोग, बेबी सीटर्स लोग यूज्ड टू लुक आफ्टर यू मिरांडा. सो मिरांडा इज आस्किंग टू हर फादर के पापा क्या 4-5 वुमेन लोगों को देखभाल करती थी. तो प्रॉस्पेरो सिंह यस ये 4-5 लोग नहीं, उससे भी ज्यादा, मोर मिरांडा, बट हाउ इज इट दैट यू रिमेम्बर this. So Prospero is very surprised because this happened 12 years old, 12 years before, and then Miranda was just 3-year-old. So Prospero is very surprised. So he says, how is that it lives in your mind कि ये सब memories तुमको अभी तक याद है, कि तुम्हारे दिमाग में image कैसे है. What else did you see? मैंने और भी तुमको कुछ याद है in the backward and abyss of time. So here her memories compared to a backward or abyss of time, a very big hole. So Prospero is saying कि उस दिमाग के खंडर में, abyss में, backward of your mind में, जो खंडर में जहाँ subconscious mind में सब memory store होता है, so in that big hole of memory do you see anything else? कहते हैं उस दिमाग के खंडर में backward memory में क्या कोई और image तुमको याद है apart from this that 4-5 women used to look after you? If you remember anything, how you came here. So Prospero is saying कि बेटी तुमको याद है तुम यहाँ कब आई, कैसे आई, can you, how did you come here? Miranda is saying but that I do not. मिरांडा बोली पापा ये सब तो हमको याद नहीं है कि हम कब आए कैसे आए, बस इतना याद है कि 4-5 वुमेन लोग हमको देखभाल करती थी. So Prospero is now narrating the story. He says 12 years since, Miranda, 12 years since. So Prospero is saying कि 12 साल पहले बेटी, 12 साल पहले तुम्हारे पापा was a Duke of Milan. So Prospero is saying to Miranda कि तुम्हारे पापा Duke of Milan थे. So Miranda को लग रहा है कि मेरे पापा अगर Duke of Milan थे तो जो आदमी जो अभी मेरे से बात कर रहा है ये कौन है. So Prospero is saying 12 years since, Miranda, 12 years since thy father was a Duke of Milan. 12 साल पहले तुम्हारे पापा ड्यूक ऑफ मिलान थे. एंड ए प्रिंस ऑफ पावर मीन्स उनके पास बहुत पावर था. ही वाज अ प्रिंस एंड ही हैड लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर. मिरांडा सर आर यू नॉट माय फादर? मिरांडा बोली आप मेरे पापा नहीं है. प्रॉस्पेरो इज सेइंग योर मदर वाज अ पीस ऑफ वर्च्यू एंड शी सेड यू आर माय डॉटर. सो प्रॉस्पेरो इज सेइंग नहीं तुम्हारी मम्मी बहुत मतलब अच्छी कैरेक्टर की वुमन थी. इट्स नॉट दैट शी हैड मेनी पार्टनर्स. आई एम योर फादर एंड योर मदर टोल्ड मी कि ये आपकी बेटी है. एंड दाई फादर वाज अ ड्यूक ऑफ मिलान. सो प्रॉस्पेरो इज नाउ क्लैरिफाइंग कि जो ड्यूक ऑफ मिलान है वही प्रॉस्पेरो है, वही तुम्हारे पापा है. पहले मिरांडा थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये आदमी क्या मेरे पापा नहीं है, क्या ड्यूक ऑफ मिलान मेरे पापा थे. So here Prospero clarifies that your father was the Duke of Milan and his name is Prospero and he was the owner or the king or the Duke of Milan and you Miranda you are the only heir of his. मतलब तुम जायदाद की इकलौती वारिस थी. So Prospero is saying कि तुम्हारी मम्मी बहुत ही अच्छी कैरेक्टर की थी. She was a piece of virtue and she said you were was whenever you were दो महीने you. So she said मतलब मिरांडा की मम्मी बोली थी मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी है. फिर प्रॉस्पेरो इज सेइंग कि योर फादर वाज अ ड्यूक ऑफ मिलान, तुम्हारे पापा ड्यूक ऑफ मिलान और हम ही है ड्यूक ऑफ मिलान. एंड तुम बेटी मिरांडा
तुम एक प्रिंसेस हो, नो वर्ड्स यू शुड, और मेरे पास और कोई इशू नहीं था, इशू मैंने बच्चा, मैंने यू आर माई ओनली डॉटर एंड आई हैड नो अदर डॉटर. मिरांडा, oh heavens, Miranda knows this for the first time in her life, that she has been living in this god-forsaken island, but she was a princess. So Miranda says, oh heaven, I am the prince. What foul play we had that we came here. Miranda is saying कि ये कितना बड़ा मतलब फाउल चीज हो गया, गलत चीज हो गया कि हम लोग यहाँ आ गए. Or was it blessed that we came here? So Miranda is asking her father कि पापा हम लोग जो यहाँ आए, was it a blessing or was it a foul play? Was it a somebody's manipulation or punishment? So Prospero is saying both, Michael, both. Prospero is saying कि हम लोग यहाँ जो आए ना बेटा, ये blessing भी है और curse भी. Curse तो is easy to understand because to live in an island without any basic amenities is a curse. But it's a blessing because of various reasons. First, that the daughter got full attention of the father, and for many other causes. So Prospero is not an idealist. He is not a pessimist. He is not an optimist also. He is a realist. Now what do I mean by this? If somebody is sent into an island, and if you ask कि आप island में रहें, मतलब kingdom छोड़ के island में गए तो क्या हुआ? So the very first thought of a common human being is कि वहाँ जाके होगा क्या? Life is hell. So the very first concept to any common human being would be कि it was just sheer wastage of life. 12 साल बर्बाद हुआ. But Prospero is saying कि अच्छा भी था और खराब भी था. So he could see the pessimist side, see the optimist side. He could see the negative, he could see the positive. So I call him a realist. A realist sees the negative and positive both. So you can write in Prospero's character. So Prospero is saying I can see ये island में आना बेटा दोनों था. Foul भी था और fair भी था. Blessing भी था, curse भी था. By foul play, as you say, we were heaved into hence. So Miranda is saying कि foul play के वजह से हम लोग को यहाँ heaved करके भेजा गया. It means we were pushed into this place. But blessed ही there Miranda. So she is saying कि हम लोग यहाँ आए थे तो foul play से, लेकिन हम लोग यहाँ रहने लगे, वो हमारे लिए blessing हो गया. So Prospero is saying कि बेटा हम लोग जो आए थे यहाँ, it was foul place, we were pushed here, but our living here, surviving on this island is a blessing. Miranda, oh my heart, it bleeds to think of the team that I have turned you to. So Miranda is saying, oh Papa, हमको सोच के कितना दुख हो रहा है कि how much trouble I must have created for you. So Miranda is saying to her father, कि father, it bleeds my heart, it pains my heart to think of what a trouble I have been turned you to, which is from my remembrance, please you, father. So वो बोल रही जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि must have been very troublesome for you. So Miranda is saying, please father, continue. Prospero continues his story and he says, my brother, Prospero's brother, Antonio, and your uncle, Miranda's uncle, called Antonio. I pray you mark it. Can a brother be so perfidious? Means can a brother be so cruel without any love and affection? So Miranda is being asked by her father. पापा पूछ रहे अपनी बेटी से कि बेटी तुम्हारे अंकल मेरे भाई हम तुमको कहानी बता रहे, तुम ये बताना कि क्या भाई इतना ही बिना दिल, बिना दर्द, बिना लव फॉर हिज ब्रदर हो सकता है? He to whom thyself of all the world I loved. So Prospero is saying I loved my brother more than anybody in the whole world. And I put him to manage my state. So Prospero is saying कि मैंने पूरा responsibility दिया था अपने पूरे kingdom को चलाने का अपने भाई को, to manage my state. As at that time, Prospero the prime duke. So he's saying at that time, 12 years before, I was the prime duke. I was the best duke of all the places. Being so reputed, Prospero is saying I was so famous, I was so respected in liberal arts. So Prospero is saying I was so famous in liberal arts that there was no parallel, without a parallel. Prospero अपने मुंह से बोल रहा है कि मेरे जैसा liberal arts में कोई नहीं था.
Liberal art nowadays it means different, but in 16th century it meant anything that the Bible would not sanction. It meant geography, it means botany, it means science, it meant science, it meant so many things. So Prospero here means to say that I was the most respectable duke, reputed duke. I had the best dignity, and Prospero says that I was without any comparison in liberal arts. Those being all my studies. So he says कि वही सब पढ़ना, liberal art पढ़ना was my full focus of my life. जिंदगी का पूरा मकसद था वो liberal art पढ़ना प्रॉस्पेरो का, जब 12 साल पहले. And the government, the administration, I cast upon my brother Antonio. So Prospero is saying कि मेरा पूरा फोकस मेरे स्टडी पे था, लिबरल आर्ट्स पे था, ज्योमेट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, मेटाफिजिक्स, ये सब वो पढ़ता था. एंड द गवर्नमेंट वो अपने भाई को दे दिया था. आई कास्ट अपॉन माय ब्रदर एंटोनियो एंड टू माय ओन स्टेज कंट्री आई बिकेम स्ट्रेंजर. सो प्रॉस्पेरो वाज बिजी डूइंग his research, you can call it, or study, or science, or black magic, or whatever you call it. So Prospero was busy all the time of the day in his own study, and he became stranger to his own country. Being so transported and wrapped in secret study. So Prospero was in Milan, but he was so wrapped and lost in his own study that it seems that he used to live in a different kind of world. Like people who watch lots of web series, they are also wrapped in their movies or web series or shows that they watch, and it seems that they get transported psychologically to that place. So Prospero अपने ही वो दुनिया में खोया रहता था और ऐसा लगता था कि वो मिलान में नहीं, वो अपने जादू के दुनिया में रहता था. So he was wrapped in secret study. Why it was called secret study? Because as I told you, Bible did not allow people to study anything that was against Bible, and science was against Bible. So Prospero is saying I was always wrapped, lost in my secret study. And thy false uncle, मेरा मिरांडा के false uncle whom you attend. So Prospero बार बार मिरांडा को बोल रहा है क्या तुम सुन रहे? Because it's a very long story, so it's very obvious that somebody might lose interest. So Prospero is saying कि बेटी सुन रही हो तुम? Miranda is saying yes sir, most heedfully, एकदम कान लगा के सुन रहे हैं, दिल के साथ सुन रहे हैं. Prospero is saying listen, being once perfected how to grant suit. So Prospero is narrating कि एक बार एंटोनियो को पता चल गया कि किसको ग्रांट करना है रिक्वेस्ट, सूट में रिक्वेस्ट, whom to deny, किसको रिक्वेस्ट नहीं देना, whom to advance, किसको कैसे आगे से पैसा देना है, लेना है, whom to thrash for overtopping, कि अगर कोई उसको उसके खिलाफ जाए तो उसको थ्रैश कर देना, मतलब उसको पॉलिटिकली बैंड कर देना है, उसके अगेंस्ट सेडिशन कर देना है. So anybody who went against Antonio was thrashed, means he was punished. Okay. New created the creatures that were mice. So people जो प्रॉस्पेरो के थे उसको मोल्ड कर करके एंटोनियो अपने जैसा बना लिया. I say और changed. जो लोग नहीं बदले उनको हटा दिया. So here Prospero is saying कि एंटोनियो को समझ में आ गया था किसको ग्रांट देना है, किसको नहीं देना है, किसको एडवांस देना है, किसको पैसा देना है, किसको पावर देना है, और जो कुछ लोग अगेंस्ट जाए तो उनको हटा देना है, या तो उनको मैनिपुलेट करके चेंज कर देना है, या उनको हटा ही देना है पोस्ट. Or else they form them having both the key of the office and the officers. तो अब एंटोनियो के पास दोनों पावर था, मॉनिटरी पावर भी और लोगों का पावर भी, ऑफिस भी और ऑफिसर्स भी, मतलब रिसोर्सेज भी और रिसोर्स चलाने वाले एग्जीक्यूटिव टीम भी. And he set all hearts to the state that what tune pleased his ear. So he only used to accept those people who used to talk in his language, in his own lines of hierarchy. मतलब ये वही गाना सुनता जो इसको पसंद था. मतलब कहने का मतलब कि उन्हीं लोगों को रखता जो इसके सुर में सुर मिलाते थे. So he set the heart to the state that pleased his tune. मतलब he used to only keep people who used to flatter him or used to follow his ideas. जो लोग भी against होते थे used to thrash them for overtopping, book में लिखा है. So what tune pleased his ear? So ये सिर्फ वही गाने सुनता था जिसको कानों को पसंद था. मतलब कि ये वही लोगों को
अलाउ करता था, जो इसके हाँ में हाँ मिलाते थे. And then this is very important, this often comes in small short question. The ivy which had hid my princely trunk, so Prospero, and sucked my verdure out of it. Verdure means greenery. So Prospero here compares himself with the trunk of a tree, and Antonio is compared to the ivy plant. So this is the trunk of the tree, and the ivy plant is coiled on the trunk of the tree. So the ivy plant gets the nutrition from the trunk of the tree. The ivy plant gets the nutrition from the trunk of the tree. Similarly, Antonio got all the power, position, money, name, fame from Prospero. So Prospero is the trunk of the tree, and Antonio is the ivy plant. So as ivy plant gets all the nutrition from the trunk of the tree, Antonio got all the power, position from Prospero. Miranda, oh good sir. Miranda saying, aha, kitna ho gaya? Prospero, I pray thee, mark me. So Prospero saying, सुनो मेरा बात ध्यान से सुनो. I thus neglecting worldly ends. Prospero is saying कि मैंने ये सब राजपाट या एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ छोड़ दिया था. All dedicated to closeness and the bettering of my mind. So Prospero is saying कि मेरा फोकस था खुद को बेहतर बनाना, अपने माइंड को बेहतर बनाना, रिसर्च करना. That which by being so retired, so he was always lonely, all alone in his own laboratory or in his own library where he was busy doing his own research. Overpriced all popular rate in my false brother. So since he was so retired, lonely, so अब इसके भाई के अंदर मैंने एंटोनियो के अंदर एक evil nature जग गया. And my trust, like good parents did, beget of him a falsehood in contrary as great as was the trust. So here it means, okay, as a good parent trust their child. Similarly, Prospero trusted Antonio, and more a father trusts his child, the more is the probability of the trust being misused. So एक पापा, पेरेंट्स जितने अपने बच्चे पे विश्वास करते उतना ही ज्यादा विश्वासघात होने का चांस होता है. Similarly, Antonio, like a good parent, trusted his brother, and the cheating was directly proportionate to the trust. The more he was trusted, the more cheating was done. जितना प्रोस्पेरो ने एंटोनियो पे विश्वास किया, एंटोनियो उतना बड़ा धोखा दिया. सो फॉल्सहुड इन कॉन्ट्ररी एज ग्रेट एज अ ट्रस्ट, मतलब जितना ज्यादा ट्रस्ट था उतना ज्यादा ही फॉल्सहुड था, उतना ज्यादा ही चीटिंग था, which had indeed no limit. So Prospero is saying that I had no limits in trusting my brother, and there was no limit in his cheating me. So Prospero trusted Antonio without any limit, and Antonio cheated Prospero without any limit. एंटोनियो ने धोखा का कोई लिमिट नहीं रखा और प्रॉस्पेरो ने एंटोनियो पे भरोसा का कोई लिमिट नहीं रखा. So this is Prospero's narrative. So he's saying कि in my brother he awakened an evil nature. उसके अंदर एक evil nature आ गया to remove me, to get my power and position. So he says I was like a good parents, beget of him. मतलब मैंने उसके अंदर इतना ज़्यादा trust, भरोसा किया, उसने इतना ज़्यादा धोखा दिया. Which I didn't need no limit. So he's saying कि my trust had no limit. And Prospero is saying that his trust had no limit and Antonio had no limit in cheating him. A confidence without bound. San mane without bound. So he says, I was so confident in my brother, confidence and been trusted in my brother without any boundary, without any limit. He thus becoming the Lord. So Antonio धीरे धीरे Lord बन गया, power हो गया उसके पास. Not only with what my revenue yielded, but with my power. So अब उसके पास revenue का भी power है, authority का भी power है, लोगों का भी power है, position का भी power है. Like one who having into truth by telling of it much made such a sinner of his memory. So here Antonio was playing the role of a duke. He was not a duke, his brother was a duke. So he was a substitute duke. So he was a substitute duke, but he was playing the role having
बुक में लिखा हैविंग इनटू ट्रुथ बाय टेलिंग ऑफ इट मेड अ सीनर ऑफ हिज ओन मेमोरी. मतलब वो अपने ब्रेन को बोलता रहा कि आई एम द रियल ड्यूक, आई एम द रियल ड्यूक, आई एम द रियल ड्यूक. यानी मैं, इसका माइंड बोलता नहीं तुम्हारे भाई रियल ड्यूक है. सो इतना बार झूठ को रिपीट करता रहा दैट हिज माइंड स्टार्टेड बिलीविंग दैट ही इज अ रियल ड्यूक. ही इवन मेड हिज मेमोरी अ सिनर. So Antonio kept on repeating to his mind, I am the real Duke. His mind was saying him, no, you're not a real Duke. Real Duke तो तुम्हारा भाई है. But ये इतना बार रिपीट किया, इतना बार रिपीट किया कि even his mind started believing him. So having into truth मतलब झूठ तो ये है और सच ये है. लेकिन the lie was so imposed on truth that the truth was lost. Antonio was not the Duke. So his mind was saying to him that you're not the Duke, your brother is the Duke. But he kept on repeating it so often, so often, so often that his mind started believing it. That his mind started believing that he is a real Duke. To credit his own lie, he did believe he was a Duke. So to make his mind believe, he started wearing the clothes like a Duke, behaving like a Duke, acting like a Duke, giving order like a Duke, having the privilege like a Duke. So ultimately, he started believing he's a Duke. एग्जीक्यूटिंग द आउटवर्ड शो ऑफ रॉयल्टी, मतलब बाहर से वो ये दिखाने लगा कि आई एम द ड्यूक. सो धीरे 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 विद ऑल द प्रेरोगेटिव्स, विद ऑल द प्रिविलेजेस, कि धीरे 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 उसको भी विश्वास होने लगा कि आई एम द ड्यूक. हेंस हिज एम्बिशन स्टार्टेड ग्रोइंग. तो धीरे धीरे अब वो ड्यूक बन ही गया अपने मन में. तब वो सोच रहा था कि हम रियल में भी ड्यूक बन ही जाए. So after saying all this, Prospero is asking his daughter Miranda, "Did you hear? Are you listening?" Miranda says, "Yes, sir. Your tale would cure deafness." Miranda is saying कि सर आपका बात सुन के तो बहरे के भी कान हो जाएंगे. Of course, hyperbole. Prospero. To have no screen between the part he played and the part he played for. So he was not the Duke, but he was playing the role of a Duke. But between the actor and the reality, he created no gaps. मतलब वो जो रोल कर रहा था और जो था उसमें कोई गैप ही नहीं छोड़ा. मतलब he was acting the role of a duke, but he was not the duke. But he acted the role so well that he almost made himself believe that he is a duke. For example, suppose you are acting the role of a beggar, and then you go and beg for 5 years. 5 years. Then when you will do the role of a beggar, there'll be no difference between the acting and your reality because you have been begging for 5 years. So here, Prospero is saying he was playing the role of a duke, but he did it so well and he made his mind believe that he is no more acting the role of a duke, himself is a duke. So there was no difference between the part he played and the part he played for. मतलब जिसका एक्टिंग कर रहा था और वो जो था इसमें कोई फर्क ही नहीं रहा. वो ड्यूक का एक्टिंग कर रहा था और अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ड्यूक है. नाउ हिज नीड्स बी एब्सोल्यूट मिलान. अब बहुत वो रोल किया, अपने आप को ड्यूक समझा लिया, लेकिन अब वो फुल 100% पावर चाहता था विथ नो बडी टू कम एंड डिस्टर्ब हिम. सो उसको डर होगा शायद के बाद में अगर प्रॉस्पेरो अपना किंगडम मांग ले या हमको पावर ऑफ एटर्नी छीन ले. So now he wanted to have an absolute power of Milan. Milan is a country where Prospero is a duke. Me, my library was dukedom large enough. Prospero is saying कि मेरे लिए मेरा kingdom ही बहुत बड़ा लाइब्रेरी था. This is a very important line in the play. So Prospero is saying कि मेरे लिए मेरा लाइब्रेरी ही एक kingdom था. Of temporal royalties, he thinks me now incapable. Prospero is saying कि एंटोनियो को लगने लगा कि हम प्रॉस्पेरो अब ये किंग वाला रूल करने के लिए, किंग वाला ड्यूटी करने के लिए मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं रहा. So Prospero is saying that my brother thought me that I am not capable enough to do the duty of a king. And confederates, मतलब he made a conspiracy with few other people so dry for sway. मतलब कुछ लोग उससे conspiracy करने के लिए एकदम बेताब थे. He made conspiracy with a person called Alonso, who is the king of Naples, to give him some annual tribute. So Antonio said, I will pay some money to a person called Alonso, who is a duke, who is a king of Naples.
So king of Naples will help Antonio in reviewing Prospero. इसे सुनिए. So he made confederates, he made friendship with some people. And so dry he was for sway. मतलब Antonio was ready to swim and lose from his position. So he made friendship with King of Naples to give him annual tribute. He decided that he will give some annual tribute. मतलब Antonio decided they will give some money annually to Alonso. To do him homage, मतलब as a kind of respect. Subject is coroner to his crown. मतलब this small kingdom, ये small kingdom जहाँ अलोंसो अभी मतलब जहाँ एंटोनियो भी किंग था और अलोंसो वाला किंगडम बड़ा था, तो ये छोटा किंग एंटोनियो विल सरेंडर टू द बिगर किंग नेपल्स. मैंने मिलान तक कम पावरफुल छोटा प्लेस था और नेपल्स बड़ा प्लेस था. मतलब एंटोनियो छोटा राजा था और अलोंसो बड़ा राजा था. ये छोटा राजा बड़ा राजा के अंडर में आ जाएगा. सो ही विल सब्जेक्ट इज कॉरोनेट. कॉरोनेट मैंने स्मॉल क्राउन और क्राउन मैंने उससे बड़ा वाला. सो एंटोनियो विल submit himself, surrender his power to a bigger king Alonso and bend down his dukedom. और फिर वो झुक जाएगा एक शहंशाह के आगे. Yet unbowed, he's saying कि मेरा country जब तक हम king थे, my country had never bowed down. He's saying alas मेरा country कितना अच्छा था, उस country को झुकना पड़ा Alonso क्या. To most ignoble stooping, he's saying कि ऐसा stooping down, इतना neat stooping down, my country Milan had never done to anybody. And I sing, oh heavens, oh Bhagwan, Prospero. Mark this condition. So ये boiling down, ये condition में किस condition से कौन किसको help किया. So he's saying, listen to the condition. Then tell me if this be a brother. Prospero बोल रहा है तुम पूरा कहानी सुन लो बेटी, फिर बताना कि क्या एक भाई ऐसा हो सकता है. Miranda is saying, I would sin to think nobly of my mother. So Miranda is saying कि ये सोच के भी पाप लग रहा है कि मेरी दादी ऐसे ऐसे बच्चों को पैदा की थी एंटोनी जैसा. Good worms have given birth to bad sons. Miranda is saying कि इतनी अच्छी मेरी दादी और इतने बदमाश एंटोनी जैसा अंकल को बर्थ दी थी. Prospero. Now the conditions. This king of Naples called Alonso, being my enemy invertebrate, मतलब very deep rooted enemy था अलोंसो और प्रॉस्पेरो में. He hearkens to my brother's suit. So एंटोनी जब रिक्वेस्ट किया कि आप हमको हेल्प कीजिए, हम आपको पैसा दे रहे, so he listened to him. So एंटोनियो के रिक्वेस्ट पे अलोंसो मान गया. That was the condition was in lieu of the premises of the homage. मतलब वो in return of the homage जो हर साल देगा, मैंने एंटोनियो will pay down to Alonso. I know not how much, मैंने कितना कौन दिया था exact पैसा तो नहीं पता. How much tribute Antonio paid to Alonso should presently extricate me and my poor daughter from Milan. So ये condition पे बात तय हुआ था कि एंटोनियो हर साल कुछ पैसा देगा. एंटोनियो हर साल कुछ पैसा देगा. एंटोनियो हर साल कुछ पैसा देगा अलोंसो को. सो अलोंसो सेड इन रिटर्न ऑफ दैट ही एंटोनियो हैज टू रिमूव मी मैंने प्रॉस्पेरो एंड माय डॉटर फ्रॉम मिलान एंड कन्फर फेयर मिलान विथ ऑल द ऑनर्स ऑफ माय ब्रदर. और फिर पूरा पावर मिलान का हो जाएगा मेरे भाई एंटोनियो का. सो वेयर ऑन इज बिकॉज ऑफ दिस a treacherous army. Why it is called treacherous army? This army is called treacherous because this army actually belonged to Prospero, and some of the people were even provided by Alonso. So they are called treacherous army because they are going to remove their own king, own duke. So one treacherous army revived, matlab gathered one midnight, fated for the purpose, matlab aimed for this target. Did Antonio open the gates of Milan? तो एक आर्मी बनाया गया इस मकसद से. एक मिडिल ऑफ द नाइट में एंटोनियो गेट्स खोल दिया मिलान का. एंड इन डार्कनेस ऑफ द नाइट हिज मिनिस्टर्स, मतलब कुछ लोग जिनको ये अब ड्यूटी दिया गया था, दे हरीड हेंस मी एंड माय क्राइंग सन, मतलब हमको और मेरी बेटी को वहां से निकाल दिया गया. सो एंटोनियो opened the gates of Milan in the darkness of the night, and the ministers for this purpose
मतलब जिन लोगों को ये सब मिनिस्टर बनाया गया था, इस मिनिस्टर या मतलब है अपॉइंटेड पोस्ट दिया गया था सब काम के लिए, वो मिरांडा को और उसके पापा को मिलान से निकाल दी। मिरांडा सिंह अल्लाह पिटी आई नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विल क्राई। मिरांडा बोली हमको तो याद कुछ नहीं है, लेकिन ये सब बात सोच के अब रोना आ रहा है 12 साल बाद। सो मिरांडा सिंह आई डोंट रिमेम्बर मच बट नाउ व्हेन आई रिमेम्बर कि अब हमको जब आप बता रहे हैं याद आ रहा है धीरे धीरे हल्का हल्का। तो इट इज अ हिंट दैट ब्रिंग्स rings my eyes to tears. So she's saying कि ये सब सुन के मेरी आंखों से जैसे कपड़ा गाल के आंसू निकलते हैं, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। Prospero, here a little farther. Prospero is saying कि सुनो बेटी अभी कहानी बाकी है. And then I will bring you to the present business. So Prospero is saying अभी थोड़ा और सुनो फिर हम तुमको बताएंगे अभी presently के why did I raise this storm, which is now without which this story is most impertinent, irrelevant, not related. He's saying Prospero is saying कि अगर हम तुमको ये बेटी ये नहीं बता पाएंगे कि आइलैंड में हम स्टॉर्म रेज क्यों किए, आइलैंड से जो स्टॉर्म दिख रहा था एक्ट 1 सीन 1 में, स्टॉर्म किस लिए रेज किया, अगर ये तुमको ना पता चले तो पूरा कहानी मीनिंगलेस है। मिरांडा, whereof did you not destroy us? मिरांडा सिंह, अच्छा पापा ये बताइए कि अगर एंटोनियो को हम लोग से नफरत था तो एंटोनियो ने हम लोगों को मार दिया होता? Prospero Singh, well demanded bench. Very good question, girl. My tale provokes that question. Prospero Singh कि मेरे कहानी से ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए था. Dear is the dare not. Prospero Singh कि they did not try to kill us. Why? So dear the love of my people. मतलब लोग प्रॉस्पेरो से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि अगर प्रॉस्पेरो को ओपनली मार दिया जाता, इट वुड सेट अ ब्लडी मार्क ऑन द बिजनेस, सो एंटोनियो को एक नेगेटिव इमेज मिल जाता। बट विच कलर्स फेयर पेंटेड विथ फाउल एंड, और एंटोनियो को अपना गलत चीज को भी अच्छा दिखाना था। अगर वो ओपनली प्रॉस्पेरो को मर्डर कर देता तो इट वुड बी पेंटिंग थिंग्स इन ब्लैक, बट ही वांटेड टू पेंट बैड थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे। In few, they hurried us upon a bar. So Prospero is saying कि they left us on a ship. Prospero is saying कि हम लोगों को जब मिरांडा 3 साल की थी और Prospero was 12 years back, हम लोगों को एक शिप में छोड़ दिया गया. So the ship or the boat kept us some league to sea. मतलब वो ऐसे बहते बहते कुछ दूर तक पहुंचा. Where they prepared a rotten carcasses of a part. जहाँ एक छोटा जो ना बोर्ड जो था उसमें ना कोई रिग्ड था, मतलब कोई सेल नहीं था, वैसे से टायर्ड नहीं था, उसमें कुछ होल था. नो टैकल नो सेल, मतलब वो कपड़ा होता है, वो स्ट्रिंग होता है, रैडर होता है, कुछ भी नहीं था. इवन द रैट्स हैव इंस्टिंक्टिवली क्विटेड, मतलब जो चूहा लोग होते हैं बोट में वो भी नहीं थे. देयर द हॉइस्टर्स मतलब लेफ्ट अस टू क्राई टू द सी, मतलब वो लोग हमको ऐसे हम लोगों को मिरांडा और प्रोस्पेरो को ऐसे छोड़ के चले गए. They left us to the sea and the sea was roaring, मतलब तब तूफान आ रहा था आज से 12 साल पहले. एंड प्रॉस्पेरो और मिरांडा को समुद्र में ऐसे छोड़ के चला गया. तो द विंड वाज पिटी साइंग अस बैक, मतलब विंड इन लोग का कंडीशन देख के रो रहा था और तूफान आने लगा, मतलब विंड रोएगा तो और तूफान आएगा. सो विंड व्हेन इट लुक्ड एट द कंडीशन ऑफ मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो, दैट विंड स्टार्टेड क्राइंग at it and it added more pain to them. मिरांडा सिंह, अल्लाह what a trouble I was then to you. मिरांडा सिंह, पापा वो कितना ट्रबल दिए थे पापा पहले छोटा में, when I must have been a great trouble for you. मिरांडा सिंह, oh you were a cherubim. Cherubim is the name of an angel. मिरांडा सिंह, नहीं बेटा तुम तो मेरे लिए एक फरिश्ता थी, एक एंजल थी. Though was that did preserve me, मतलब you were the person who saved me. How? You did. स्माइल. मिरांडा को क्या पता कि तूफान आने वाला, छोटी सी बच्ची हंसती होगी तूफान में भी. सो प्रॉस्पेरो इज सेइंग कि मिरांडा यू आर स्माइलिंग एंड योर इन स्माइल इन्फ्यूज्ड मी विद फॉर्टिट्यूड, माने इट फील्ड मी विद करेज फ्रॉम विद इन. मतलब ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे स्माइल में हमको एक हिम्मत मिल रहा है, एक इनर करेज मिल रहा है विच गॉड इज गिविंग मी. व्हेन आई डेक्ड the sea dropped with full sail, मतलब I was crying and was filling the whole ship with my tears. Under my burden groan, मतलब I was crying with pain, which raised in me an undergrowing stomach. मतलब तब हमको एक हिम्मत मिला अंदर से to survive, to fight on, to prod on for my daughter.
against which to ensue. Ensue means continue moving, continue trying. So it was the smile of Miranda. Even when the whole ship was filled with tears, even when Prospero was burdened with groaning and pain. So this groaning and pain raised in him an undergrowing stomach, मतलब a inner courage to bear up against what should ensue. कुछ भी हो वो संभाल लेगा, हम लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, हिम्मत मिल रहा था प्रॉस्पेरो को मिरांडा के स्माइल से. प्रॉस्पेरो, मिरांडा सेइंग, हाउ केम वी हियर. मिरांडा सेइंग, हम लोग यहाँ कैसे पहुंचे. मिलान से हम लोग को निकाल दिया गया था, तो हम लोग इतना दूर कैसे पहुंचे. मिलान तो बहुत दूर है. नाउ दे आर इन बर्मुडा, सो व्हिच इज वेरी फार अवे. So Prospero is saying by providence divine means by luck. So Prospero is saying कि बेटा बेटी हम लोग यहाँ आए because of luck. Some food we had. Prospero is saying कि हमारे पास कुछ food था, कुछ fresh water था. And a young Neapolitan prince called Gonzalo says saying कि I knew somebody called Gonzalo. He is a person from Naples. He really loved me, loved Prospero, really cared for Prospero. तो Prospero को food, fresh water ये सब दे दिया था, because of it they could survive. Out of charity, he did not do it for profit. He did it because he thought Prospero is a good human being. Who being then appointed? मतलब he was appointed the master of this whole thing. मतलब उसको ये responsibility दिया गया था कि Gonzalo को ship में रख के छोड़ देने का. Did give us with all this, with rich garment, अच्छे अच्छे कपड़े, linens, clothes, कुछ सामान, कुछ necessary food, जो खाने पीने का सामान. We since has stayed much, मतलब कुछ कुछ ऐसे चीजें थे जो अभी तक है. So of this gentleness, मतलब Gonzalo was such a good human, gentle human being. He knew that I loved my books. उसको पता था गॉन्जालो को कि प्रॉस्पेरो को उसकी किताबें बहुत पसंद है, खास करके मैजिकल बुक्स. सो ही फर्निश्ड मी, मैंने प्रोवाइडेड मी फ्रॉम माय ओन लाइब्रेरी द वॉल्यूम्स दैट आई प्राइज अबव ड्यूकडम. सो इसको वो किताब दिया गया था जादू का, गिवन बाय गॉन्जालो, जो उसको लगता था, प्रॉस्पेरो को लगता था किंगडम से भी ज्यादा वैल्यूएबल है. तो गॉन्जालो प्रोवाइडेड हिम सम बुक्स. Those books Prospero used to think are more valuable than any kingdom. Miranda is saying, would I might ever see that man? Miranda is saying कि वो आदमी जो हम लोगों को ये food दिया, ये drinking water, clothes and magic books दिया, क्या हम उसको कभी देख सकते हैं पापा? क्या कभी वो मिल सकते हैं हमसे? Prospero is saying, so Prospero is saying, sit still and hear the last of our sea sorrow. Prospero is saying कि तुम यहाँ बैठो और कहानी का कुछ last part सुनो. Here in this island when we arrived, so Prospero is narrating all this story to his daughter Miranda. So the next, if this video has been of any benefit to you, I request you to share it with your friends. And if you have any question, please comment in the comment box for us to know your queries. Thank you for watching the video.